Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Z Educate. I am back with my new video and the lesson number 5. Today is the lesson is on part of speech. How many parts of speech are there in English language and what are those? Let's have a look. So guys, there are 8 parts of speech. Number 1 is noun. I already told you in my previous video what is noun. Noun is the name of person, place, concept or object. When we are talking about a person, when we are highlighting a person with the name, like if I'm talking about a person with the name of Ali, Ahmad, Rumasa, so I am highlighting the name. I am talking about the particular person. But when I am talking about any person without any name, for suppose if I am saying I want to talk to that boy, मुझे उस लड़के से बात करनी है, ठीक है? सो तब मैं इसे कहूंगी प्रोनाउन. नाउन का जो रिप्लेसमेंट है प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं कि जब मैं व्हेन आई एम गोइंग टू से और राइट this is a boy, I'm talking about a boy, your boy is a pronoun because I am not highlighting the name. But when I will say or I will write or you will write he is Ahmed, so you are highlighting the name of the person. This is called pronoun. Okay, when you are highlighting the name of a person, place, concept, idea, emotion, that comes in noun. But when you're talking about pronouns, you're not taking a particular name, but you are highlighting that thing that I'm talking about a male person or a female person. Okay, for suppose, let's see few more examples. For suppose I, me, you, he. Now see, he is a boy, he. I am not saying any name, but I am talking about a person that is a male. He, she, it, we, they, us, them, who, what, this, that, anyone, कोई भी, nobody, कोई भी नहीं, something. These are called pronouns. Now let's see the third point in part of a speech. First was noun, second was pronoun, third one is adjectives. What are the adjectives? Adjectives are the word that describes noun. How Romasa is so beautiful. Adjectives are the words that describes noun. I am talking about noun. Noun क्या है? हम किसी person के बारे में अगर बात कर रहे हैं, for suppose I am talking about Romasa. Romasa is a noun. ठीक है, अब noun adjectives में कैसे? Adjectives कैसे उसे describe कर रहा है noun को? That Romasa is beautiful. Your beautiful is adjective. In a sentence, noun is describing to adjective, beautiful. He is a bad boy. Now he is your pronoun. Bad is your adjective. I like red color. Now I is your pronoun and red is your adjective. Adjective means to highlight or to support a sentence or their meanings. Okay. Verb. Number 4 is verb. What are the verbs? These are bolded words that describe specific actions. Verbs. Verbs are, what are the verbs? Verbs are action words. How? If you are jumping, अगर आप jump कर रहे हो, आप किसी action कर रहे हो ना, आप jump कर रहे हैं, you are eating, आप खाना खा रहे हैं, that is a action. आप लिख रहे हैं, that is a action. आप भाग रहे हैं, that is a action. इसी को हम verb कहते हैं. In very simple words, verb क्या है? जो भी आपके action words हैं. Action words क्या है?
कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी मूवमेंट हो रही है, आप मूव कर रहे हैं, आप च्यू कर रहे हैं, आप चबा रहे हैं, तो उसमें आपकी मूवमेंट हो रही है, आपकी चिक्स की। आप लिख रहे हैं, आपकी हाथ की मूवमेंट हो रही है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपकी फिंगर की मूवमेंट हो रही है। आप पढ़ रहे हैं, आपकी आईज की मूवमेंट हो रही है। तो दैट्स कॉल्ड वर्ब, as it's written over here: running, winning, and being. Now let's see some more examples of verb. Act. You can write these words in your notepad, diary, or you can take a screenshot, or you can watch video again and again to memorize these words. ये कुछ verbs के example words हैं जो आपको sentence जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत काम आएंगे। तो आप इन्हें कहीं लिख लें या आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। That's your choice. Let's do a practice. Repeat after me. Act. Act means हरकत करना. Break. तोड़ना. Color. किसी भी चीज का कलर. Cry. रोना. Drink. पीना. Laugh. हंसना. Plan. कोई भी प्लान बनाना, कोई भी मंसूबा बनाना. Run. भागना. Shout. चीखना. Sneeze. छींकना. Touch. हाथ लगाना. Answer. जवाब देना. Build. किसी भी चीज को बनाना. Cough. खांसी. Dance. डांस करना. Eat. खाना. Lie. झूठ बोलना. Play. किसी भी गेम को प्ले करना. Scream. चीखना. Sing. गाना. Solve. किसी भी पजल को सॉल्व करना, किसी सम को सॉल्व करना. Turn. घूम जाना. Approve. किसी भी चीज को अप्रूव करना. हाँ ठीक है, सही है, या उसे जैसे अगर आपको कोई पीस ऑफ पेपर दे रहा है कि काइंडली अप्रूव इट, तो ऑब्वियसली आप उसे पढ़ेंगे, उसके बाद आप अप्रूव करेंगे. दैट्स कॉल्ड अप्रूव. किसी भी चीज को इजाजत देना, किसी भी चीज की. बाय. खरीदना. क्रिएट. बनाना. अब देखें बिल्ड और क्रिएट. बिल्ड में भी बना, बिल्ड की मीनिंग भी बनाना है, बट बिल्ड हम मोस्टली यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स को बिल्ड कर लिया, लेगोस को आपने बिल्ड कर लिया. क्रिएट भी का मतलब भी बनाना है, पर इनकी मीनिंग जब सेंटेंसेस में आती है तो चेंज हो जाती है. अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीज, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. डिस्क्राइब. किसी भी चीज को समझाना. एडिट. किसी चीज को एडिट करना. कंप्यूटर में हम एडिटिंग करते हैं, मोबाइल में एडिटिंग करते हैं, मैसेजेस में एडिट करते हैं. लिसन. सुनना. रीड. पढ़ना. सी. देखना. स्किप. किसी भी चीज को स्किप कर देना. अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ और मुझे वो पेज नहीं पढ़ना, तो वो पेज छोड़कर आगे वाला पढ़ सकती हूँ. दैट्स कॉल्ड स्किप, कि उस पेज को आपने छोड़ दिया और नेक्स्ट पर चलेगा. इस तरह कोई भी चीज स्किप कह सकते हैं. स्टडी. पढ़ना. वॉक. चलना. अरेंज. किसी भी चीज को सेट करके रखना, अरेंज करके रखना, सीक्वेंस वाइज रखना. कोच. पीटी के कोच होते हैं, योगा के कोच होते हैं, टाइकांडो के कोच होते हैं जो आपको लीड करते हैं. दैट्स कॉल्ड कोच. क्रिकेट मैच में आपके कोच होते हैं. ठीक है. कंप्लीट. पूरा करना. ड्रॉ. बनाना. एंटर. किसी चीज को एंटर करना, ऐड करना, उसमें आगे करना. ठीक है. डालना. पेंट. पेंट करना. रिप्लेस. किसी भी चीज को तब्दील करना. शॉप. दुकान. स्लीप. सोना. टीच. सिखाना. विन. जीतना. नाउ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स. ये कौन से वर्ड्स थे? वर्ब थे. और वर्ब क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिसमें हम कोई भी एक्शन कर रहे हो. Adverbs. Adverbs क्या होते हैं? Here are a few examples of adverbs. Adverbs. Mostly, I entered the room quietly. Or is describe how you entered a verb the room. ठीक है. Adverb जैसे noun को जो है वो replace करते हैं pronoun, वैसे ही verb को जो है वो replace करते हैं adverbs. What are those? Let's have a look. Also, alone, at least, even, either, exactly, extremely, in particular, mainly, neither, not only. These are all your adverbs. You can write it down on your
paper or notebook and just have a look. These are few examples of adverbs. Now, what are preposition? The sixth one. Preposition tell us the relationship between the other words in a sentence. Prepositions क्या होते हैं? When we are जब आप English में बात करते हैं, when you are talking about talking in English, or when you are writing a sentence, so at prepositions जो है हमें help करते हैं sentence को complete करने में. For example, school is cancelled on Friday for the party. अगर मैं इसे ऐसे कर दूं कि स्कूल इज कैंसल्ड फ्राइडे पार्टी, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा. अक्सर लोग इस तरह लिखते हैं, पर मेक श्योर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में कहलाया जाता है, जो कि हम अक्सर कर देते हैं. सो प्रीपोजिशंस कभी भी आप ना भूलें लिखना और उनकी प्रैक्टिस जरूर किया करें. स्कूल इज कैंसल्ड ऑन फ्राइडे, कैंसिल होगा फ्राइडे को. क्यों? फॉर द पार्टी. ठीक है, किस वजह से होगा? फॉर द party. Now on and for is your preposition. Here are some preposition examples and the words. You can have a look and you can write it down on the piece of paper as well. Let's do a practice of your words: about, at, for, on, to, above, below, from, over, under, across, by, in, past, until, after, down, into, since, up, and so and so. You can you can write it down on the paper or do practice along these. Okay, so seventh one is conjunctions. What are these? Conjunctions make a possible to build complex sentence that express multiple ideas. If you're talking about something, I like to eat pizza, but I don't like to eat donuts. मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है, पर मुझे डोनट्स अच्छे नहीं लगते. सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं इनकी. ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में है, My mom doesn't think my dad is funny. मेरी माँ ये नहीं समझती कि मेरा डैड फनी है, बट क्योंकि she loves him, क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करती है. But is your conjunctions. And here are a few more examples: for, and, not, but, or, yet, so. Now the eighth one, last but not the least, articles. What are the articles? Articles are the three words that are used in sentences: the, and, a. These are called articles. बहुत आसान है, बहुत सिंपल. मैंने बहुत कोशिश की है कि इसे जितना सिंपल हो सके इतना सिंपल करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं. So let's see the example sentences. The apple was juicy and delicious. अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, apple was juicy and delicious, पर ये आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता without articles. So you have to write the apple was juicy and delicious. We are looking for an apartment. We are looking for apartment. A is your vowel, so for vowel we are using an. And when we are talking about a consonant word, we will use a. And a is stand for one thing or for consonant. And an is stand for vowel. जब भी हम vowel वाली words लिखेंगे जिसके शुरू में vowel होगा, we will use an. और अगर किसी word के शुरू में consonant hoga, so we will use a. These are called articles. I hope guys you have enjoyed the lesson of the days. So please do practice on the daily basis and mention in the comment box if you have any question or queries. Don't get shy, just give me a comment. I'll try to reply you as soon as possible. Take care, bye bye. See you soon. Allah Hafiz.